Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, viewers. Welcome once again to my channel. My name is Mohammed Atiqanur, and you're watching my channel, Mohammed Atiqanur, and Education for Us All. So, a quick plea before we start to please watch fully and to please like, share, and subscribe to the channel. So, welcome once again. This presentation is in the recipe of the day, and it's something that's very popular here in the UK. It's always made in restaurants. It's chicken. It's usually chicken balti, but we add vegetables just to add a bit flavor, and obviously it is something that is found on the BBC. So here it is. So once again, it's at the request of a number of our friends who wanted a step-by-step guide, as opposed to the practical ones which are on hold for the foreseeable future, shall we say. नाज़रीन खुश आमदीद मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एंड एजुकेशन फॉर अस ऑल। एक बार फिर है जी रेसिपी ऑफ द डे। आज एक बार फिर ये चिकन सालन की डिश है, इसे चिकन बाल्टी कहा जाता है। इसमें हम वेजिटेबल्स भी डालते हैं और ये एक और डिश है जो बीबीसी पर थी, तो मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो इंग्लिश में जो मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने कहा कि स्टेप बाय स्टेप वाला प्रेजेंटेशन हो। दूसरा जो है वो क्या कि वो उस तरह नहीं फॉलो कर सकते, तो ये मेरे लिए बहुत इजी है। सो हियर इट इज़। लेट्स स्टार्ट। हियर आर द इंग्रेडिएंट्स गाइस। नाज़रीन आपको ये चीज़ें ज़रूरत होंगी। Okay, it says calorie controlled cooking oil spray. So, well, we know what that is. It's a spray that you can control. Nazreen, yes, क्या कहें कंटेनर है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं कितना स्प्रे करते हैं तेल। 1 medium onion thinly sliced, एक अदद छोटा सॉरी मीडियम प्याज जो बारीक काटना है। 4 chicken thighs boned and skinned, 4 thighs लेग का ऊपरा हिस्सा जिससे हमने हड्डी निकालनी है और स्किन भी उतार देनी है। 1 red pepper de-seeded and cut into centimeters, एक शिमला मिर्च रेड कलर की है, आपकी मर्जी जो भी हो। रेड कलर की और yellow color की, so we're going for the colors here. A red color and a yellow color pepper. 1 tablespoon corn flour, एक tablespoon corn flour, मकई का आटा हो। 150 grams of fat-free natural yogurt. So this is the key ingredient, guys. 150 ग्राम नाजरीन दही चाहिए, ये क्या जिससे खटास सबसे कम हो। ये वाइटल इंग्रेडिएंट है इस डिश में। 1 tablespoon mild curry powder, 1 tablespoon जी curry powder, 2 garlic cloves thinly sliced, 2 थोम के टुकड़े जो हम बारीक काटेंगे। 227 grams of chopped tomatoes, 227 ग्राम tomatoes जो हमने काटने, सॉरी इसे टिन या टिन में जो छोटे टुकड़े टुकड़े हूँ। 3 heaped tablespoon of fresh coriander plus extra for garnishing. Okay, 3 अदद धनिया और कुछ और जो हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और आखिर में पेपर हस्बे ज़ायक़ा। Okay, let's show you the method.
Okay, spray a large, deep, non-stick pan or wok with oil and place over a medium heat. Add the onions and cook for 5 minutes, stirring lightly until well softened and lightly browned. ओके जी, हमने एक वॉक या नॉन स्टिक पैन लेना है। तो उसकी क्या कहें, साइड्स और नीचे हिस्सा ऑयल स्प्रे करना है, ताकि अब इसमें हम फ्राई कर सकें। तो प्याज और सॉरी प्याज डालना है। तो ये हम 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे और इसे मुसलसल हिलाएंगे जब तक ये नरम हो और हल्का सा भूरा रंग हो। Meanwhile, trim all visible fat off the chicken thighs, cut each one into 4 pieces and season with black pepper. ओके जी, अब हमने चिकन तैयार करनी है, उसकी फ़ैट उतारनी है और 4 पीसेस करने हैं और उसे ब्लैक पेपर से मैरिनेट करना है। Add the chicken and peppers into the pan with onion and cook for 3 minutes, turning occasionally. अब हम चिकन और शिमला मिर्च पैन में डालेंगे और 3 मिनट्स को उसको कुक करेंगे और पलटना है ताकि दोनों साइड्स कुक हों। जैसा मैं कहता हूँ, इनकी टाइमिंग बहुत ही कम होती है, मैं तो 8-10 मिनट लगा देता हूँ। Meanwhile, in a small bowl, mixed corn flour with 2 tablespoons of cold water and stir in yogurt thoroughly until mixed. Okay, एक छोटी बोल लेनी है, उसमें हम मकई का आटा डालेंगे, 2 टेबलस्पून और ठंडा पानी और योगर्ट, तो उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। Sprinkle the curry powder over the chicken and vegetables and add the garlic and cook for 30 seconds. Okay, अब हमने करी पाउडर और या नमक नहीं लिखा हुआ था, वो भी डालना है। करी पाउडर और जो स्पाइसेस इस्तेमाल करने हैं वो चिकन और वेजिटेबल पर डालना है। तो फिर हम लहसुन डालेंगे और इसे कुक करेंगे। Again, very short timing written here, I would say at least 2 minutes. Cook for 30 seconds. Okay. Tip the tomatoes into the pan, add the yogurt mixture, 150 milliliters of water and coriander. Okay, अब हमने टमाटर डालने हैं, दही डालना है और 150 मिलीलीटर पानी डालना है और धनिया डालना है। Bring to a gentle simmer and cook for 20 to 25 minutes. Again, I would say longer. नाज़रीन, यहाँ लिखा हुआ है कि इसे हल्की आग पर कुक करना है 20 या 25 मिनट्स, आई वुड से 30 to 35 minutes, stirring occasionally until the chicken is tender and the sauce is thick. Season with freshly black pepper to taste and garnish with coriander. That's आखिर में हमने जी हस्बे ज़ायक़ा काली मिर्च डालनी है और गार्निश करेंगे इसको धनिया के साथ. It really is a lovely dish and it really is simple. Okay, let's show you the picture of it if I can. There we go. Yeah, Nazreen, चिकन एंड वेजिटेबल बाल्टी जैसा देख सकते हैं। ये चिकन के टुकड़े बहुत बड़े नहीं करने, इन तक क्या कहें माउथ साइज हों, और जो शिमला मिर्च है वो ज़्यादा छोटी नहीं करनी। तो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट आई वुड से is the yogurt that makes the difference, and of course the mixture of spices. So ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, हस्बे ज़ायक़ा, you know, जितना हिसाब से हो इतना ही टेस्टी है. So we make this quite regularly, and I say the yogurt makes the difference really, and the combination of spices, and I think the size of the chicken makes a difference as well. You know, it may not cook that well if it's such large chunks, and you need longer, and also
the peppers. You don't want them to be too thin as well. Okay, that is it. So, as always, I have prepared the Urdu and will show you, and then that will be the end. नाजरीन ये है जी उर्दू का ट्रांसलेशन अगर मैंने पढ़ा तो आज इसमें हम 10 मिनट्स से इतनी ज़्यादा नहीं होगी पर अगर मैंने पढ़ा तो बहुत ज़्यादा होगा तो आप अपने टाइम में इसे पढ़ लें और समझें Okay, I thank you for watching. I think for the first time I am in time. I it just remains for me to say thank you again. Please like, share, and subscribe to the channel. Look after yourselves, look after others. Until the next time, goodbye. नाज़रीन अपना ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखना दूसरों का ख्याल रखना दुआओं में याद रखना अल्लाह हाफिज़